Hello, beautiful people. I hope you all are doing great. I'm not doing too bad myself. So CUET का पेपर मेरा shift 1 पढ़ा था on 13th of May, as I mentioned in the caption also. And I'm here to share my experience so you guys don't get nervous like I was a bit. And okay, so before this video मेरे को बस एक चीज़ बोलनी है कि please कुछ भी हो जाए do not panic because eventually things will work out. Okay, so do not panic. Okay, anyway, let's just begin with it. And if you guys still have any questions or any doubts, don't don't be afraid of asking them in the comment sections. Okay, so I'm a little bit of camera shy, but I'm trying. Okay, and मेरा accent भी निकल जाता है कभी कभी. Anyways, first thing, be punctual guys, please. Punctual. ओके बिकॉज जब मैं गई थी वहाँ पे तो लाइक मेरे को 8 बजे तक पहुँचना था एंड लाइक मेरी लाइक रिपोर्टिंग टाइम मतलब जब गेट क्लोज हो जाता है इट वॉज 8:30 राइट एंड मैं 8 बजे पहुँचना था एंड मैं लाइक 5 to 10 minutes आई वॉज लेट एंड आई वेंट विद माई ग्रैंड पेरेंट एंड ही वॉज लाइक सेइंग कि जब मैं गई तो लाइक 20 minutes जस्ट उसके 20 minutes बाद गेट क्लोज हो गया था एंड आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक what from what he said, okay, he said कि 50 students, like about 50 students were there standing and they were denied, their entry was denied, like, so just be punctual, okay guys. At least have a target of 40 minutes to reach before your reporting time or the gate closing time, whatever that is. So please do that, please. For outfits, okay guys, I would just say one thing, एक ही tip है, which is कि please be simple as possible. Simple, एकदम simple बन के जाइए. No earrings, no bracelets, no rings, nothing, no perfume, nothing, okay. And for girls, I would say कि if you're wearing a top, make sure that nothing is written over it, okay. And even if there is something written over it, it could be minimal but depends, okay. And for boys also, nothing written over it, okay. And just simple trouser or something, for bottoms. But matlab ye hai ki like you can't wear belt, right? So if your bottom is loose, so I would say choose another bottom because you can't wear belts. And what I did was on the first day of my CUET, that what I did was I was carrying actually a backup outfit, which was a formal, just like a t-shirt, which you would wear in an interview, right? So I was carrying with that myself, but thank God it was not required at all. but जल्दी ये सब बताने वाली हूँ आपको. एंड आई एम ऑल्सो प्रिटी कन्फ्यूज कि मुझे ये अपने वीडियोज़ जो है इंग्लिश में रखने चाहिए या हिंदी में रखने चाहिए. आई एम जस्ट लाइक वेरी कन्फ्यूज. तो फॉर नाउ आई विल बी bilingual is the word for it. So yeah, and for what documents you have to carry, I've actually mentioned all of the things here. These are the things you have to read. My experience, the reason why I say 40 minutes is because जब मैं गई थी वहाँ पे मेरा पता नहीं, I think it was my fault, I'm not sure, but जैसे मैंने अपना रोल नंबर चेक किया, it was like 3rd floor or something, it was lab, there are labs, okay. So I was going and मैं जब वहाँ जाती हूँ and they were like कि आपका नंबर यहाँ नहीं है तो आपको नीचे जाना है. And then I'm like okay, मैं नीचे जाती हूँ. एंड मैं नीचे गई, वहाँ पे एक्चुअली उनके सिस्टम में कुछ इशू हो गया था, बट इट वॉज फिक्स्ड विद इन 2 to 3 minutes. आई वॉज गेटिंग अ लिटिल नर्वस. आई वॉज लाइक कि व्हाट इफ कि मतलब वो ग्लिच ठीक ही नहीं हुआ, मतलब बिकॉज वो वेरिफिकेशन बायोमेट्रिक्स होते हैं वो करते हैं, तो वो हो नहीं रहा था कुछ. तो फिर मैंने वेट किया एंड गेस व्हाट, मेरा वहाँ पे भी रोल नंबर नहीं था. और फिर मैं लास्ट एकदम गई, फिर वहाँ पे थैंक गॉड मुझे मिल गया रोल नंबर अपना. So yeah, that was that, and I'm not promoting this perfume, it's just the perfume I have. I wanted to apply it a little bit. And yeah, अगर बात करूँ तो ये आपके साथ भी हो सकता है, तो प्लीज़ गाइज 40 minutes पहले आ जाइए तो बेटर रहेगा. One thing I want to say that is do not panic. मेरे साथ क्या हुआ था, जब मैं ऑप्शंस क्लिक करी थी, इट्स CBT मोड राइट, तो लाइक लास्ट के 1 hour में पता नहीं क्या इशू हो रहा था. इट वॉज लाइक द ऑप्शन आई वॉन्टेड टू क्लिक, इट वॉज नॉट क्लिकिंग, लाइक आई वॉज नॉट एबल टू मार्क दैट. बट डू नॉट पैनिक गाइज, डू नॉट पैनिक. यू कैन ईदर आस्क द इन्विजिलेटर, मतलब आप इन्विजिलेटर से पूछ सकते हैं, दे विल हेल्प यू आउट, दे विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट. एंड मतलब डिपेंड करता है, मेरे सेंटर में टचवुड अच्छे थे
इन्विजिलेटर्स आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट एनीवे मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल अच्छा था, बस जिस ऑप्शंस का वो इशू था, बट डोंट वरी, यू जस्ट ट्राई, कीप ऑन ट्राइंग टू मार्क दैट ऑप्शन। और वन मोर थिंग यू कैन डू इज कि आप लाइक किसी और ऑप्शन को मार्क करो पहले, फिर दोबारा उसको ट्राई करो, तो इट वर्क्स, इट वर्क फॉर मी, ओके, इट वर्क फॉर मी। एंड पैसेज बेस्ड क्वेश्चन कुछ आए थे, ऑफ कोर्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइट। तो उसमें थोड़ा ये था कि स्क्रोलिंग का इशू हो रहा था कुछ बच्चों को, एंड कुछ लाइक आई वाज टॉकिंग टू सम पीपल एंड दे वर लाइक कि हमें क्वेश्चंस ही नहीं दिख रहे थे, एंड आई वाज लाइक कि डिड यू नॉट स्क्रॉल, एंड दे वर लाइक anyway let's not talk about that. But you know, if you have some, if you experience something similar, remember that उसको आप scroll कर सकते हैं, एक होता है नीचे करने के लिए और एक साइड में, तो you can easily grasp what the question is saying, okay. And what else, मेरा shift one था, I'm not sure how the paper difficulty and level would be for other, but to be honest, talking about mine, I had VA, I mean English and language, okay, and then I had physical education, and then I had GAT, of course. I had 3 papers. You know, when I was telling to my friends, they were like, "Oh my God, you have 3 subjects." But I was like, "Yeah, yeah, I have it." Yeah, so I had it, and that's okay. You know, फिजिकल एजुकेशन में मेरे को बस एक ही डाउट था कि सिलेबस में उसमें गिवन था कि आपको एक स्पोर्ट्स करके जाना है, यू कैन ऑप्ट वन स्पोर्ट्स, बट दे वर लाइक मल्टीपल स्पोर्ट्स कमिंग, लाइक आई डिड वॉलीबॉल, like I did volleyball and I was preparing for that. I mean उससे भी क्वेश्चंस आए थे, बट और भी कुछ स्पोर्ट्स आए थे, जैसे स्विमिंग से आया था, आई रिमेंबर, एंड या ऐसे क्वेश्चंस आए थे काफ़ी, मतलब काफ़ी तो नहीं बोलेंगे, तो आए थे, ओके। सो या दैट हैपेंड, आई डोंट नो व्हाई बट इट हैपेंड एनीवे। वो था इंग्लिश, काफ़ी सही थी। आई थिंक द ट्रिकी पार्ट वाज सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। आई मीन व्हाट हैपेंड वाज कि मतलब उसके क्वेश्चन का जो क्वेश्चन में मतलब जो है, you know that, you know the meaning of that word, but the options were so tricky, like you can't mark them for some reason. I mean you can't mark them because there's negative marking, right? So that was that, you know. But yeah, if you have great vocabulary, you have just so much great vocabulary, you will get it, right? ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा ही difficult आया था पेपर, I would say it was moderate level, depends on everybody's preparation, I would say. GT, no comments, no comments about GT. Just kidding. GT was also pretty good. History से questions आए थे, quants आए थे. Guys, I have one thing to say: do not panic. I'm saying this again and again. Do not panic. You have yourself. You have the invigilators. They will help you out. Don't make assumptions about them unless you actually talk to them. Okay. Overall, yeah. So overall, it was good experience, I would say. CBT mode. The one thing I like the most about CBT is that there was the timer, you know, and we were able to understand better. So I think, you know, many people ask whether you prefer OMR or CBT. I would personally say CBT because, you know, you have this timer going on and so much of facilities, I would say. But at the same time, it has drawbacks, of course, that clicking thing and scrolling and everything. It does takes a little bit of time, but if you know, you know, okay, and you will work it out. You will be fine. And please, guys, do not worry. You will be fine. You will be fine. Why are you worrying so much? You should worry about your preparation, okay? That's the most important thing, right? So yeah, that's it. That's all I have to say to you guys. And if you guys still have any doubts, you can ask me, of course. And okay, now I will sleep. Yes, I'm shooting this in night because I had some interviews, and if you want to know which interview I gave, write it down. Write it down. Okay, good night, guys.